Hello, good evening. Today we are going to write a question about L.H. Morgan. Yesterday we had seen this, we had written this question about E.B. Tyler, if you remember. Then we had read about L.H. Morgan. Now we are first going to see what were the questions asked in the previous year papers about L.H. Morgan. So if you see, there is this one question. How did Morgan explain the evolution of marriage, family, socio-political organization, and how did other evolutionists disagree? This is a 2015 का question, okay? So ये हम solve करेंगे और दूसरा जो question हम solve करेंगे that is same thing जो हमने टाइलर के साथ किया था, write a short note on L.H. Morgan. ठीक है, तो पहले नोट से स्टार्ट करेंगे हम. फर्स्ट विल राइट दिस क्वेश्चन in today's video, and then in the next video we'll write this second question. Okay, so let us start here. Just give me a second. Okay. Yeah, I think this much thickness is good enough. Let us start. So this is the second question we are writing. Write a short note on L.H. Morgan. I request you all to take a pen and paper, and if you have any UPSC sheet, then you can take that. Else, you can just take any normal sheet and you can start writing with me. Then it will be beneficial because these concepts they require time to get into your head for you to learn, right? So we'll start the timer, the stopwatch, and then we'll see in the end and how much time we were able to complete this answer. Okay, let us start. Let's convert it to blue and let's start. Okay. L.H. Morgan, first we'll write the full form. Louis Henry Morgan in the 19th century anthropologist. Belonged to the classical school of evolutionism. So, classical school of evolutionism. School of evolutionism. Okay. And next, he was an American anthropologist. And we'll just write a small gist about his work. American anthropologist with important work in kinship terminology. Important work in kinship terminology because that was the topic where he worked a lot, right? Kinship terminology. Terminology. Okay. Let's write his literary contributions. Literary contribution. Okay, we'll just mark this in this way. The first is the League of Iroquois. League of Iroquois. This was around 18. I don't really remember the year. Let's see if it comes. League of Iroquois and then System of Consanguinity. System of Consanguinity. And Affinity. In Roman families.
in women families. It is also 1870 or 60 somewhere he wrote. And then the last book was Ancient Society. This I think is 1877. So this was 60s and 70s. So I'm writing 1861 and 1871 maybe. I exactly don't remember, but 60s or 70s में अगर कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ then I think it should be fine, but we'll cross check this. ठीक है. अब next है his contributions. Contributions, you remember that first evolutionary stage दिया था. ठीक है. Then marriage, family, kinship, इन सब के बारे में बात किया था, right? Then he gave about the kinship terminology. So what we'll do is we'll directly make the table over here. This much is enough. So directly table बना देते. Evolution, stages, then marriage, family, economy, and political structure. Political structure. ठीक है. छोटा करके रखती. थोड़ा फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम में भी ऐसे ही बनाएंगे हम. लोअर एंड मिडिल सैवेजरी. तो मैं पहले सारे स्टेटस दिख रही. अपर सैवेजरी, then lower and middle barbarism, then upper barbarism, and then civilization. Last is civilization. Marriage में this is promiscuity. Then comes, just small arrows over here for you to understand. Promiscuity से आया group marriage से आया pairing marriages, that is loosely paired. Then polygamy, and then last में monogamous. Yeah, monogamous. फैमिली में आता है promiscuity में क्या था, promiscuity था क्या, याद नहीं आ रहा. ओके, लेट्स सी. ग्रुप मैरिजेस में पुनालुनी कहते थे, इसे पुनालुनी. इन्हें सिंडाजमी. फिर इनको पेट्रियार्कल पॉलीगामी मीन्स वन मैन मल्टीपल वुमेन. एंड देन नाउ इट इज मोनोगामस फैमिलीज. ये प्रॉमिस्कुअस फैमिलीज ही है शायद. कॉन्जैंग्यूनल, या कॉन्जैंग्यूनल है. ओके, चलो याद आ गया. कॉन्जैंग्यूनल. अब इकोनॉमी जो है वो पहले यहाँ पे वुमेन होता था, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय वुमेन, बाय फीमेल. और यहाँ पे इन तीन में प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मेल, ओन्ड बाय मेल. ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा. ओके, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. लेट्स सी दिस. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आता है, ट्राइब है, कॉन्फेडरेसी है, एंड स्टेट है. तो यहाँ पे तो स्टेट आ जाएगा विच इज सिविटास. ये ऊपर वाले सारे सोसाइटास है. ये यहाँ इस स्टेज में कॉन्फेडरेसी, इसके ऊपर ट्राइब, या यहाँ पे मैट्रिलिनियल क्लैन, सेक्शन और मिलिट्री क्लैन.
और यहाँ पे आएगा सेक्शन है, इंसान है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ये वाला कौन सा था, इसको चेक करेंगे हम, ठीक है। ओके, सेकंड ही टॉक्ड अबाउट किनशिप टर्मिनोलॉजी where what did he do, he इसको ऐसे रखते थे, यहाँ पे इन सबको दोनों में लिखा ही था, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं दो में, वन इज क्लासिफिकेटरी and next is descriptive. Classificatory was of two types. One is Malayan type and the other is Turanian Gunanian type. Turanian, Gunanian, Turanian. इसमें there is the example of Hawaiian people where there is merging of collateral. Merging of collateral. Here some collateral were merged, not were merged. The example क्या है? Iroquois. And descriptive are where different kin is called with a different name, right? Name or you can say collateral. ठीक है, तो ये हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन सोसाइटी में। ओके, तो यहाँ तक हमने लिख दिया, हमें इसके बाद इनके क्रिटिसिज्म लिखना है, तो पहले क्रिटिसिज्म लिख देते हैं, फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस एंड देन वी कैन। अब यहाँ पे हम जर्म्स ऑफ थॉट्स लिख सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा, हाँ ठीक है, इट बी बेटर वी राइट द जर्म्स ऑफ थॉट फर्स्ट। थर्ड इनका आइडिया था अबाउट germ of thought, which is that mind, similar mental response due to which similar cultural behavior. Okay, I think this much is enough. Now let's see about the criticism. First is transport, overemphasis, overemphasis on over generalization. I think इसमें over generalization बोला था, over generalization without much data. Okay, and second, Malinowski. Malinowski has told that it is ethnocentric है, right? Ethnocentric, फिर overemphasis on progress, on progress. So this is the ठीक है। अब contemporary relevance देख लेते हैं। Contemporary relevance में like right, refugee and migrants, they are dependent on extended kin relations, which is societals,
for their security, financial assistance when the state, which is the civitas, it fails. ठीक है, तो ये लिख दिया हमने. हम इसको एंड कर सकते हैं. Thus, Elish Morgan's work plays a very important role in anthropological studies. ये हम एक सिंपल सा कंक्लूजन लिख रहे हैं बिकॉज कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस काफी अच्छा लिखा है इन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज. दैट्स इट. देखते हैं, हमें आज ज़्यादा टाइम लग गया मुझे लगता है. ओके, स्टॉप. 13 मिनट्स लगे हमें. ओके, सो लेट्स चेक आवर आंसर. यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें भूल गई. इफ़ यू सी, बिकॉज ये मैंने कल रिवाइज किया था और बस इफ़ यू सी दैट आज जब मैंने लिखा तो बहुत सारे जो डेटा वाले पॉइंट्स है वो मैं भी भूल रही थी. सो दैट इज़ वाई एंथ्रोपोलॉजी का यही मेन इशू है दैट यहाँ पे जो डेटा लर्न करने वाला डेटा है वो बहुत ज़्यादा है. एंड जनरली फॉर एग्जांपल दिस, जैसे ये डेट्स है और इनके प्रोसेसेस में जो यहाँ पे मैं भूल गई एग्जैक्टली क्या था. या फिर आई थिंक सो नो प्रॉपर्टी है, अभी याद आ रहा है. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में तो फर्स्ट वाला याद ही नहीं आ रहा था. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट. हम जनरली तो अभी, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो ये उतना दिखाई नहीं देगा. बट या दिस वन वाज इम्पोर्टेंट, ये वाला आना बहुत ज़रूरी था. बट वील गो एंड वील रिवाइज वंस अगेन, तो ये वाली चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे. सो इफ यू सी नाउ, now I'll tell you a very important thing which happens when the examiner is correcting your copy of your optional. ठीक है, अभी देखो जो आपका कॉपी करेक्ट करते हैं वो जनरली उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपका कॉपी करेक्ट करने के लिए. वो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 मिनट्स, 1 मिनट में लाइक वो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं लाइक विद इन 1 मिनट, राइट. सो इससे ही विल जस्ट चेक द की पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल लुई हेनरी मॉर्गन, then 19th century anthropologist, classical school, American, okay, kinship terminology, fine. तो यहाँ पे this is a decent introduction, he'll understand. Books लिख दिए दी, okay, this is also decent. He'll come to contributions, okay, evolution लिखा, marriage, family, ये देख लेंगे. और ये पुनालिम्स investment, मेल फीमेल सेक्शन कॉन्फिडेंट, ठीक है, इतना देख लेंगे. एंड दैट्स इट. पेयरिंग ग्रुप में एंड वो आगे बढ़ जाए, उनको समझ में आ जाएगा आपने लिखा है. क्लासिफिकेटरी, डिस्क्रिप्टिव, मलानियन, तुरानियन, ओके, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. जर्म ऑफ थॉट के बारे में लिखा है. क्रिटिसिज्म, ट्रांसपोज, मेलनोस्की. देन कंटेम्प्रेरी, ओके, रेफ्यूजी से लिंक किया है. सोसाइटीज एक्सटेंडेड है. सिविटास फेल हो रहा है, ओके. एंड दिस इज अ ओके नॉर्मल कंक्लूजन. सो यू सी, बस वो इतना 1 मिनट में वो बस इतना ही देखेंगे. बट हियर वेयर वी कैन स्कोर मोर देन द अदर्स इज फर्स्ट, इफ यू हैव, इफ यू आर मेकिंग अ टेबल. अगर इस टेबल के फॉर्म में आप ये पूरा मैरिज, फैमिली और इन सबको एक ही जगह पे लिख रहे हो, सो बेसिकली यू आर सेविंग स्पेस ओवर हियर. आप स्पेस सेव कर रहे हो. ओके, 1 सेकेंड. यू आर सेविंग स्पेस, ठीक है. एंड आप कंटेंट रिच लिख रहे हो बिकॉज बहुत सारे लोग अगर इसको सेपरेटली लिखेंगे तो इतना सारा डेटा वो नहीं लिख पाएंगे इस 10 मार्कर के क्वेश्चन में, करेक्ट. और यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिखे, इरोक्यूस इंडियन सोसाइटी. दिस कैन ऑल्सो बी अ लिटिल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, उतना नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस क्रिटिसिज्म जो स्कॉलर्स ने दिया है, ये बहुत डिफरेंशिएट करता है हमारा दूसरों के आंसर से. बिकॉज बाकी जो लोग होंगे दे विल मे बी एथनोसेंट्रिक ये सब लिखेंगे जो सिंपल पॉइंट्स होते हैं, ओके, ओवर एम्फोसिस ऑन प्रोग्रेस. बट किसने कहा है वो उससे लिंक नहीं करेंगे. तो वहां पे आप यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हो. यहाँ पे डेफिनेटली हाफ मार्क आपको ज़्यादा आप गेन कर सकते हो. और दूसरा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आधा मार्क तो कंफर्म है जो आप गेन कर सकते हो, ठीक है. जैसे रेफ्यूजीज को हमने लिंक किया, ये जनरली कोई करेगा नहीं. तो ऐसे जो चीज़ें होती है ना, 2-3 चीज़ें ही हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, बाकी तो जो सब लोग लिखेंगे वही लिखेंगे. बट दीज थिंग्स विल एड
मार्क्स, मतलब ये एक मार्क प्लस वन भी अगर हमें बाकियों से मिल गया ना, सो इफ देर आर 20 क्वेश्चंस यू विल गेट 20 मार्क्स एक्स्ट्रा देन योर कॉम्पिटिटर्स, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस। सो अभी चलते हैं, मैं भी थोड़ा रिवाइज करती हूँ एल एच मॉर्गन फिर से, आप भी थोड़ा रिवाइज कर लेना एंड प्लीज राइट दिस आंसर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल राइट द सेकंड क्वेश्चन वेयर एल एच मॉर्गन का मैरिज, फैमिली एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में है। उस क्वेश्चन को हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें क्या कंटेंट वैल्यू ऐड करना है, वो मैं आपको एक बार बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।